In a management, the top level managers should know about their employees' perceptions and behave with them accordingly. Definition of perception. According to a Van Heller Gimler, Gilmer, perception is the process of becoming aware of a situations and adding a meaningful associations to sensation. The importance of perception to understand the employee's importance in a cognitive process. It is also known as the mental process, analysis of a thinking and knowledge. That shapes the personality of an individual. Study of a mental activity like thoughts, views, and imaginations. The knowledge of a unsatisfied needs, the nature of a perception. First is subjective process. Second, activation process. Third, wider than a sensation. Fourth, the mental process. Fifth, the mental use. Sixth, the specific interpretation. Seven, the various components. First, start with a subjective process. Subjective process is based on the person interest, opinion, and feelings. Whereas the activation process makes an individual active. In the wider than a sensation, just look, touch, drink, and etc. Whereas a perception analyzes the thinking about what we have sensed. In a mental process, mind is a necessary for a selecting or a selection, organizing and interpreted the information. Whereas a multiple use, they used in a many ways. For example, selection of our employees, training and rewards. Specific interpretations means that each person have a different explanation, opinion about the sense scenario. Whereas the various components, the perception depends on the internal and external components. In internal components, whereas the need, value, and feeling. Let's talk about the factors affecting perceptions. Whereas the two types of factor affecting perceptions. First is internal factor, second is external factor. Whereas the internal factor needs and desire, experiences, learning and personality. Whereas the external factor we talk about intensity, size, frequency, order, repetitions and etc. अब हम बात करते हैं परसेप्शनल प्रोसेस के बारे में. Whereas the receiving stimuli, second होता है उसमें selecting stimuli, third organizing, fourth interpretation and response. फर्स्ट हम बात करते हैं रिसीविंग स्टिमुली में. दो पार्ट्स होते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल इंटरनल एंड एक्सटर्नल. वेयर एज सेलेक्टिंग स्टिमुली में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. वेयर एज इंटरनल फैक्टर में जो होता है हमारा लर्निंग, नीड्स, एज एंड इंटरेस्ट. वेयर एज एक्सटर्नल फैक्टर्स नेचर, लोकेशन, साइज एंड कॉन्ट्रास्ट, मूवमेंट, रिपीटेशन एंड सिमिलैरिटीज. Whereas ऑर्गेनाइजिंग में हम पढ़ते हैं फिगरिंग, बैकग्राउंड, परफेक्शनल, ग्रुपिंग, सिमिलैरिटीज एंड प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर एंड कंटिन्यूटी. Whereas इंटरप्रिटेशन में हम पढ़ते हैं एट्रीब्यूशन, हेलो इफेक्ट्स जो आते हैं हमारे, प्रोजेक्शंस के बारे में. रिस्पॉन्स में हम पढ़ते हैं कोवर्ट एंड ओवर्ट. Whereas कोवर्ट एटीट्यूड, मोटिवेशंस एंड फीलिंग. ओवर्ट मीन्स बिहेवियर. ये जो हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्लास में होगा हमारा परसेप्शनल प्रोसेस के बारे में. अभी हम बस परसेप्शंस के बारे में, अब थोड़ा सा कैटेगराइज भी उसका, कैटेगराइज ऑफ परसेप्शंस के बारे में बात करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन के बारे में. उसमें फर्स्ट होता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस, सेकंड होता है हमारा नीड और मोटिव्स, थर्ड हमारा पर्सनालिटी, फोर्थ हमारा होता है वैल्यू एंड एट्रीब्यूट एटीट्यूड्स,
फिफ्थ होता है हमारा लर्निंग एंड एडेप्टेशंस। सिक्स होता है हमारा नॉलेज। सेवेंथ इज इमोशन इवेल्यूशन। एट्थ होता है हमारा बिलीव्स पे। नाइन्थ होता है हमारा इनर नीड्स पे। टेंथ होता है हमारा पर्सनैलिटी पे। 11th होता है हमारा मेंटल सेट पे। और 12 होता है हमारा रिस्पॉन्स सैलियंस। और 13 होता है हमारा रिस्पॉन्स डिस्पोजिशन पे। 14 होता है हमारा एक्सेप्टेशंस पे। ओके, हमने अब पढ़ लिया हमने परसेप्शंस के बारे में, और हमने परसेप्शंस के इम्पोर्टेंस भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने परसेप्शंस के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शंस के बारे में। थैंक यू सो मच।